Hello friends, students and my dear buddies. Myself, Sandesh, I've done my MSc in Biotechnology and I'm the faculty of Biology in Godadil Educations. Okay, this video is for those particular students. ये video उन students के लिए है जो newly admission लेना चाहते हैं, particularly 11th standard. So बहुत से लोग confused होते हैं which particular field should they choose, whether they should go for science, commerce or the arts. So in this particular lecture, in a very short lecture, मैं तुम्हें science ये particular stream के बारे में बताऊंगा and especially the science related to biology. यहाँ पे इस particular lecture में हम कौन-कौन से contents cover करने वाले हैं. The very first content is the science and biology. How ये दोनों एक दूसरे से related हैं. The second particular content हम इसमें जो cover करने वाले हैं, that is the scope of biology and its careers. Scope of biology and its careers. The third particular content इसका हम लेने वाले हैं biology का correlation with other subjects, and then we are going to do a particular kind of comparison also between the class 9th and 10th standard syllabus with the 11th and 12th standard syllabus. And finally, अगर biology ये एक upcoming field है अभी, तो इसका how we humans are doing the misuse of biology that we are going to study in this particular lecture. Biology का किस तरीके से misuse हो रहा है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. अब पहला very first particular point जो है science. Now, जब हम science की बात करते हैं, when we talk of science, ये एक particular Latin word से derive हुआ है, and this Latin word is scientia. Latin word is scientia. Scientia से word आया है science. This particular term is given by William Whewell. इसने ये particular term दिया था scientia. Okay, when you talk of the fathers, okay, ये particular सारे streams तुम्हें पता है कि इसमें fathers तो होते हैं लेकिन mothers नहीं. That means you can imagine what kind of like mystery is going to happen in this particular field. तो यहाँ पे the father of science is Galileo. The father of science is Galileo. But now जैसे recent researches लगते जाते हैं NASA में every particular second, okay, so science has got converted into modern science. That is the father of modern science. The father of modern science is Sir Albert Einstein. Okay, Einstein का अपने एक particular mysterious period रहा है, जबकि आज तक सब में ज़्यादा brain जिसने use किया है वो है Sir Albert Einstein. Okay, एक normal इंसान का brain अगर हम लेते हैं तो normal इंसान के brain का weight near about 1300 grams होता है. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट वाज बिलो 1300, इट वाज 1230 grams, बट स्टिल ही वाज द मोस्ट जीनियस पर्सन इन द वर्ल्ड. ऐसा क्यों है? इसका पर्टिकुलर रिसर्च लगाया गया और रिसर्च में ये पता किया गया कि जो ग्लियल सेल्स है, जो न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले न्यूरोग्लियल सेल्स है, आइंस्टाइन के पर्टिकुलर ब्रेन में काफी ज्यादा नंबर में थे, एंड दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू यूज द मैक्सिमम ऑफ हिज ब्रेन. और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के मौत के बाद भी इवन उसका ब्रेन चुरा लिया गया, उसको चॉप किया गया और आज तक उसको प्रिजर्व करके रखा गया. एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी. इसका पर्टिकुलर आईक्यू टेस्ट जब किया गया था तो मैक्सिमम आईक्यू टिल द डेट दैट इज 165. एक्चुअली nobody has crossed the IQ of 148 and he has crossed the IQ of 165, which is the maximum. If you have the IQ of 120 and above, तो इसको जीनियस कहा जाता है. If you have the IQ of 100 and above, इसको good कहा जाता है. If you have the IQ of 80 to 100, it's called better. And if you have below particular 80 or 50, it is called a poor IQ. तो ये particular term हुआ related to the science. Now we'll come and jump onto the spectacular, the amazing world of biology. Okay? तो इस particular biology में इसके अंदर हम पढ़ेंगे how this particular term came. जैसे ये particular term Latin word से आया है, this term came from the Greek words, and those Greek words were bios
and logos. Bios and logos. Bios का मतलब है means the life. Bios means the life. And logos का मतलब है to study, to discourse. To study or to discourse or to explore. That means इसके अंदर हम continuous researches लगाते रहते हैं. तो what we can call biology as? We can call biology as life sciences, the study of life. And you know, life is real beautiful. We have got amazing kind of trees. We have got those jumping rivers. We have got oceans. We have got the sun. We have got the moon. We have got the entire universe, okay, supporting us. But you know, somehow we human beings called Homo sapiens sapiens. Sapiens means the thinkable person. Yes, we have got the ability to think. हमें thinking power है. But you know, when anything given in excess is misused, and likewise we misuse the gifts given by God, and we are facing the effect of it right now. So biology, the term came from the Greek word bios, means life, and logos means to study, to discourse or to explore. और ये particular term दिया था, this term was given by the scientists Lamarck and Treviranus. Lamarck and Treviranus. Lamarck and Treviranus ने ये term 1902 में दिया. Okay, now we talk of again the father with no mother, father of biology. Biology के father है Aristotle. Sorry to say Aristotle is not related to our any kind of friend. We'll say Sir Aristotle G. Okay, Sir Aristotle G is the father of biology. Okay, now we'll talk about certain very important major branches of biology. Biology के कौन-कौन से हैं major branches of biology? Biology के major branches में आते हैं तीन particular parts. You have the botany, you have the zoology, and you have the microbiology. Microbiology. जो particular botany है, okay, this is related to the study of plants. Okay, इसको संस्कृत में बोला गया था स्थावरा. स्थावरा. स्थावरा मतलब एक जगह पे जो स्थिर रहते हैं, एक जगह पे जो रहते हैं, जो मोटिलिटी नहीं दिखाते. That means it is the study of plants. Then zoology. Whenever we use the term zoo, that is something related to motility, something related to animals. कुछ ऐसे particular organisms जो एक से दूसरी जगह पे move कर सकते हैं. So इसलिए the Sanskrit called it as Jangama. Sanskrit called it as Jangama, and this is the study of animals. And the microorganisms, the study of microorganisms is called microbiology. Abhi you know better the terms use milli, micro, nano, pico. Okay, from that we have to consider the term micro. Okay, even then recent new branches emerged out, जिसका नाम है nanotechnology. Okay, the microbiology, when it comes to micro, it is called sukshma. That is called sukshma. That means very small, particular, tiny, बहुत छोटे-छोटे kind of microorganisms. So here we'll deal with the study of microorganisms. यहाँ पे हम microorganisms की study से deal करते हैं. Again we come on to the same particular point, the fathers of these particular branches. इनके fathers कौन-कौन हैं? Botany, the Vanaspati Shastra. Okay, इसके particular father है the Theophrastus. Father is Theophrastus. When it comes to zoology, इसके father है Aristotle. Aristotle. And when it comes to microbiology, the father is Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. Okay, तो हमें इस particular point में ये notice करना होगा कि जो father of zoology Aristotle है, वही father of biology Aristotle भी है. Okay, compacting it in one particular minute. Okay, science derived from the Latin word scientia, biology derived from the word bios means life, logos means to study, to discourse or to explore. Okay, then the term is given by William Whewell. The father of science is Galileo, whereas the father of biology is Aristotle. The father of modern science is Albert Einstein. Okay, and here likewise we have also the father of modern biology. Father of modern biology. Okay, the father of modern biology is Charles Darwin. Charles Darwin. The different particular branches of biology: botany, the Stavara, the study of plants;
जिसके फादर है सर थियोफ्रास्टस। Zoology, जंगमा, the study of animals, जिसके फादर है एरिस्टोटल। Microbiology, okay, the सूक्ष्म, the study of microorganisms, जिसके फादर है सर एंटन वॉन लिवेनहॉक। So this point we have covered up, that is the science and biology. Now we'll jump on to the second particular point, that is okay, we'll come on to correlation with other subjects. इसका क्या particular correlation establish कर सकते हैं हम other subjects के साथ में? It's like a very particular kind of science जिसके अंदर हम नहीं बोल सकते कि biology अकेला study किया जा सकता है. Biology is not an isolated or a separate science. Biology के लिए हमें दूसरे subjects का particular knowledge होना भी very must and essential है. कैसे? Let's see it out. When it comes to science, we talk of physics, chemistry, maths and biology. Okay? तो यहाँ पे at the base you have the physics, then you have the chemistry, then you have the mathematics, then you have the biology. अब जो particular physics है ये कैसा है? Something that is unseen, something that is unseen but present, unseen but present. किसी ने gravity को देखा नहीं, लेकिन gravity present है. कोई particular force of friction, coefficient of friction mu हुआ नहीं, but present है. हमें दिखता नहीं है, लेकिन होता है. That is all about physics. It's an imaginary world. It's a hypothetical world. And you know, we youngsters have most of our life spent in imagination only. You know it better. Okay? Now chemistry. Chemistry is something again unseen, but still present. You don't see any particular two oxygen atoms coming, two hydrogen atoms coming, the one oxygen atom coming and the water being formed. Okay? But ऐसा होता है. Okay? ये unseen है, लेकिन present है. Okay? Now, when we talk of maths ऐसा subject है जो particular हर field में use होता है. You have the application of mathematics and physics as well as in chemistry as well. And biology, how we can just connect it to other particular subjects. अगर हम biology को mathematics से connect करते हैं, the field is called biomathematics or the biostatistics. Biomathematics or biostatistics. अगर हम chemistry से connect करते हैं, the field comes as biochemistry. If we connect it to the physics, the term comes as biophysics. That means ये कोई एक separate अलग particular field नहीं है. जब तक हमें इन तीनों subjects का support ना मिले, तब तक biology complete नहीं हो सकता. We need to have the basic clear concepts of all these subjects to learn the biology. Okay? So when we talk of physics, physics is called the mother of science. Mother as well as the king of science. Mother and king of science. When we talk of the mathematics is said to be the queen of science. The queen of science. ये होता है mathematics. Okay? अब कैसे biology related है mathematics से? How? Simple particular तरीका है कि हम जब भी population study करते हैं, survey करते हैं, तो हम pie diagrams निकालते हैं, हम bar diagrams निकालते हैं, subdivided bar diagrams निकालते हैं, histograms निकालते हैं. Okay? Even in plants हम arithmetic growth, geometric growth ये particular formulas consider करते हैं. जब तक हमें arithmetic and geometric के concepts पता नहीं होंगे, we'll not be able to study the relative growth rate. Likewise, ये mathematics से connected. Biochemistry, the very particular allied fields, the friendly fields. Okay, biochemistry. हमें particular 11th 12th standard में biochemistry and biomolecules नाम का topic है. और ये ऐसा topic है जो particular NEET वाले students को भी और JEE वाले students को भी. तो हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं. जैसे अगर मेरी बॉडी बनी है, मेरा सेल बना है, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, ओके, बहुत सारे पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, तब जाके हमारी बॉडी बन रही है. दैट मींस डेफिनेटली द बायोलॉजिकल बॉडी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री. फिर और क्या बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे particular functions of enzymes है, actions of enzymes. यहाँ पे हम reaction study करते हैं. Hormones के actions के लिए भी हमें chemical reactions रखते हैं. Okay? Again we talk of photosynthesis and respiration. यहाँ पे भी chemical reactions है. The reaction of photosynthesis.
6 CO2 plus 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll, giving you C6H12O6 plus 6 H2 and 6 O2, the oxygen is released. That means photosynthesis के इसमें भी chemistry use हो रहा है, respiration chemistry use हो रहा है. Okay, तो जो food हमने खाया है उसको हम oxidatively break down कर रहे हैं. जैसे C6H12O6 plus 6O2 gives you 6 CO2 plus 6 H2O plus the formation of 13 ATP. That means chemistry का definitely usage है in biology. The third particular term जो कि है biophysics. अब physics का कैसे use होगा biology में? We have used all the instruments made by the physicians, made by the people of physics, जो biologists use करते हैं, जो doctors use करते हैं. If you want to go for computed tomography scanning, the CT scan. If you want to go for MRI, that is magnetic resonance imaging, okay, the X-rays, the UV rays, the gamma rays, the sonography technique, the ultrasound technique, even the microscope to study the microorganisms, ये सारे invent किसने किए? The base of physics, definitely. Okay, हम eye का structure जो है, हम eye का structure like biology में भी study करते हैं और eye का structure हम physics में भी study करते हैं और किस तरीके से image form होती है इसके लिए हमें physics का optics समझना बहुत ज़्यादा important है. Likewise हम बोल सकते हैं कि सारे particular fields जो है biology से related है. And finally when we talk of all these particular fields, the governance of all these particular fields is by a very particular important field that is called the geography. Geography. The geography is called the mother of all the sciences. Mother of all the sciences. सारे sciences का mother है. कैसे? Because you know geographical distribution होता है, okay, एक particular bird पर्वत के उस पार रह रहा है. That means the Himalaya के उस पार रह रहा है. दो particular birds हैं, एक दूसरे को चाहते हैं. They are in love with each other, but they cannot meet. Why? Geographical barrier, the mountains. Okay, that means फिर वो particular bird अलग species में develop होगा evolution से और इधर side में जो है वो अलग species में develop होगा by evolution से. So this is the geography, and in geography, okay, we have studied there is a name. जब भी science is like an incomplete field yet, इसमें कोई particular 100% researches नहीं लगाए गए. Every particular second, okay, you have more than 100 discoveries hitting the NASA related to brain only. Okay, तो इसके बारे में अगर बोला जाए, जब भी हमें कोई चीज का आंसर नहीं मिलता तो हम बोल देते हैं ये किसने किया? भगवान ने किया. Alright, we say that it is made by God. Okay, जब भी अर्थ पे पहली बार इस चीज की डिस्कवरी हो रही थी कि पहली बार सेल कैसे आया, okay, बिग बैंग थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया. Okay, लेकिन पहले जो थ्योरीज आए सबने बोला कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी ने एस्टैब्लिश किया. Okay, so we talk about the term भगवान. Bhagavan. Now it has got certain meaning in it. BH, Va, and Na. BH means Bhumi. Ga means Gagan. Va is again distributed into Va and A. Va means Vayu. A means Agni. And Na means Neer, the water. Bhumi means the space. Gagan, Bhumi means the earth. Gagan means the space. Vayu means the wind. Agni means the fire. And Neer means the water. That means it is said that God, you are omnipresent. You are present everywhere. Okay? You are present on the earth. You are present on the space. You are present in the wind. You are present in the fire. And you are present in the water. You are omnipresent. And you know, the particular term biology, okay, हमारे हर organs को target किया जाता है in the film industry, the Bollywood industry especially. जितने songs हमारे particular आँखों पे, that means नैनों पे and दिल पे बने, okay, उतने songs कोई particular दूसरी चीज पे नहीं बने. चलाओ ना नैनों से बांध रे, okay, आंखें तेरी इतनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया, okay, okay, माधुरी दीक्षित ने सबको गलत साइंस सिखा दिया, okay, हार्ट को बोला धक धक करने लगा. अगर हार्ट धक धक करता है तो हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता. द हार्ट साउंड इज मर्मर, दैट इज डिफेक्टिव वॉल्व साउंड. ओके, हार्ट धक धक नहीं करता, हार्ट लब डब करता है. दैट मींस इट इज लब डब करने लगा. इट्स दैट वे.
Okay, so definitely this biology is like ruling the entire particular industry. Okay, so this was about correlation with other subjects. With maths, you have biomathematics and biostatistics. With chemistry, you have biochemistry, and with physics, you have biophysics. Now, we'll come on to the scope of biology and careers. The scope of biology and its careers. Now, when we talk of biology as such, जब हम biology के बारे में बात करते हैं, तो definitely इसका काफी ज़्यादा scope है. Okay? बहुत से लोग मुझे questions पूछते हैं कि which field is better, medical या engineering? Okay? तो medical अगर हम बोलते हैं, तो medical हमें life देता है, और engineering हमें comfort देता है. That means ACs, the particular bikes, the particular cars, जो comfort है, और life comfort के बिना नहीं जी जा सकती. Okay, so nobody is better or best or bad. Okay, ताली एक हाथ से नहीं बजती. Okay, that is why medical and engineering both are equally important. It depends on your area of interest कि तुम कौन सा choose करते हो. जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको choose करो. That is the most correct answer I feel. Now the scope of biology. अगर हम biology को choose करते हैं तो इसका scope क्या है? When we talk about the various careers in biology. इसके अलग अलग से particular streams, okay? Biology के अलग अलग particular streams. Now, mostly the entrance exam is NEET, the National Eligibility Cum Entrance Test, and we also have some as the state CTs. Okay, like we have in Maharashtra the MSCT. We get admission to various particular courses. The most important course that the people struggle for is MBBS. Okay. MBBS is a course of 4.5 years, and there is the half year, that means the 6-month internship period. And after that you have to go for, this is something which is NEET UG, the undergraduate course. Then you have the NEET PG, the postgraduate course के लिए entrance. Or फिर you can enter into the field of MD or MS. Okay, and specialize in various particular fields like eye से related है, तो ophthalmology. अगर हम पर्टिकुलर ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड लेते हैं तो ENT स्पेशलिस्ट. अगर हम हार्ट से रिलेटेड लेते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट. ओके, अगर हम ब्रेन से रिलेटेड लेते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट. ओके, तो जो पर्टिकुलर होता भी है और दिखता भी है वो है बायोलॉजी. ओके, तो अब बायोलॉजी में एक ऐसी चीज है जो होती है लेकिन दिखती नहीं है. ओके, दैट इज माइंड. ओके, माइंड कहां पे? निकाल के दिखाओ. यू कैन नॉट शो. तुम्हें हेडेक हो रहा है, बताओ, निकाल के दिखाओ. नहीं दिखा सकते. बिकॉज यू नो द साइंस, द न्यूली ब्रांच इन द न्यूली इमर्ज साइंस इज न्यूरोसाइकाइट्री. न्यूरोसाइकाइट्री. ओके, डॉक्टर हमें जो चीज सोचने के बारे में ना बोले, मे बी ऐसा हो सकता है कि हम उसके बारे में बिल्कुल ना सोचे, या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसी के बारे में सोचते रहे. बिकॉज ये डिपेंड करता है हमारी पर्टिकुलर साइकोलॉजी पे. और हमारी पर्टिकुलर साइकोलॉजी जो है ये डिपेंड करती है कि हमारी परवरिश कैसे हुई है. ओके, हमारा पर्टिकुलर बैकग्राउंड कैसा रहा है, हमारे लाइफ में कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस आए हुए हैं जिसके वजह से हम ऐसे बने. ऑल डिसाइड्स द साइकियाट्री फील्ड. एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ द पर्सन, द विकिपीडिया और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द पर्सन, यू कैन नॉट से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर साइंस. और इसलिए इस फील्ड में सब में ज्यादा स्कोप है. The second particular stream you have the BDS, the Bachelor of Dental Sciences. Then you have BAMS, the Bachelor of Ayurvedic Sciences. Then you have BUMS, the Bachelor of Unani Medicine Sciences. Okay, you have the B Pharmacy, the Bachelor of Pharmacy. You have the BSc and MSc in Nursing. Okay, you have the Bachelor of Physiotherapy, the one who go for massages and the kind of like magnetic belts is given in the Bachelor of Physiotherapy. Okay, other particular special emerging new fields, the new or you can say the applied biology fields, जिसके अंदर biology का application किया गया है. The very first field is biotechnology. Okay, जो मैंने किया है, done MSc in biotechnology. The next particular stream is bioinformatics.
बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर या आईटी का कॉम्बिनेशन। दैट मींस जो भी चीजें तुम पढ़ोगे दैट विल बी थ्रू कंप्यूटर्स ओनली। ओके, देयर विल बी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स and through those particular softwares and codes you will get the authentic information restricted to NASA only. That means the most correct information is given to bioinformatics people. Okay, these are the newly emerging fields and the most important area in all the particular fields, be it physics, chemistry, maths, biology, that is the section of R&G, the research and development, a high scope to this particular field. जैसे कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की मैंने पढ़ा है, मैं उसकी बात करता हूं। ओके, जैसे कि एक्वेरियम में जो फिशेस रहते हैं, इन फिशेस को इतने ब्यूटीफुल कलर्स कैसे आए, इतने फ्लोरोसेंट कलर्स कैसे आए? ये कलर्स आए जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेड इन इट। ओके, वी टॉक ऑफ लव बर्ड्स। लव बर्ड्स केजेस में रहने के लिए बने, उनके इतने ब्यूटीफुल ऑसम कलर्स कैसे आए? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ओके, अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर प्लांट की, प्लांट का लीफ का कलर होता है ग्रीन। थिंक दैट ग्रीन डजंट एब्जॉर्ब सो मच अमाउंट ऑफ लाइट। ओके, इसलिए ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता नहीं, हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती नहीं। थिंक व्हाट इफ वी टर्न दिस पर्टिकुलर ग्रीन लीफ टू ब्लैक लीफ। if we introduce silica genes into the leaf, तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा एंड ब्लैक कलर has got maximum absorption power। वो पूरा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, पूरा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो नेचुरली हमें ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, सारी चीजें हमें उससे कई गुना ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। ओके, द IVF, in vitro fertilization, that is test tube baby program, introduced by biotechnologists, ये सारे newly research areas है in the field of biology. Okay, and when we talk of misuse of biology at last, okay, कि biology का misuse कैसे किया जा रहा है? Now see, recently in the quarantine, we know it's a bio war going on. The countries are एक दूसरे से fight कर रहे हैं through weapons, and those weapons are biological weapons. The recent one is the coronavirus. Okay, the World War I, the Vietnam War. Okay, that was like with the bacteria called Bacillus anthracis. वो एक bio war था. Even the China-Japan war, okay, the Iran-Iraq war, ये सारे examples है bio weapons के। अब हम इसी particular biology का misuse कर रहे हैं, खतरनाक से viruses बना रहे हैं। आजकल missiles को तुम्हारे पास कितने instruments है, इसको कोई value नहीं रही है। The emerging field is genetic engineering. Okay, हम अलग तरीके से genetic makeup change करके virus को dangerous से most dangerous बना के हम पूरे particular like we can kill the entire country. Okay, and that is the misuse of biology. हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं एक प्लांट के साथ में, तो क्या प्लांट को किडनीज है? नहीं है। क्या प्लांट को हार्ट है? नहीं है। क्या प्लांट में ब्लड है? नहीं है। क्या प्लांट को आंखें है? नहीं है। Plant don't have all these sense organs, but still they release the oxygen and purify the air. There is something to learn from these plants, and what we are doing. We have got the brain, heart, lungs, kidneys, everything. Okay? But somehow, it is important where to use brain, why to use brain, and to whom we should use this particular brain and cephalon. We are misusing the biology. Second misuse of biology is amniocentesis. Amniocentesis, amniotic fluid निकाला जाता है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है क्या कोई नए बच्चे में, वो गर्भाशय में, फीटस में चेक किया जाता है। लेकिन इसका भी हमने मिसयूज किया, सोनोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स का। ओके, इन इंडिया इट इज लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटस स्टेज में ही फीमेल को किल कर दिया जाता है बाय डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, जो कि एक मिसयूज है ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू इन शॉर्ट what actually biology is, okay, what actually science is, and likewise we complete with this particular topic. Okay, stay happy, stay safe.